Hello बच्चों, let's read this question. The enthalpy change for the reaction of 5 liter of ethylene with 5 liter of hydrogen gas at 1.5 atmosphere pressure is delta H is equals to minus 0.5 kilojoule. The value of delta U will be, and 1 atmosphere liter is equals to 100 joule is given. And these are the following options. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन आता है और वी कैन से मैथमेटिकल इक्वेशंस आता है, दैट इज द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व, दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. पर एनर्जी को हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर दैट जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, इट इज that change in internal energy is equals to the heat plus work done. and जो हमारे पास work done होता है thermodynamically, that is equal to the delta PV. it is negative of delta PV. so हमारे पास delta U is equals to Q plus minus of delta PV हो जाएगा. here it is this. तो ये प्लस माइनस का जो हमारे पास होगा, इट विल गेट माइनस का साइन, Q माइनस डेल्टा PV रह जाएगा हमारे पास. एंड नाउ वी विल टेक द प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लेंगे. सो डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस P कांस्टेंट है, सो देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम. सो बाय दिस वी कैन सी जो हमारे पास QP होता है, और we can say heat at constant pressure is equals to the change in enthalpy. So here we will write the same change in enthalpy minus P delta V. So this is the equation for the relationship between the internal energy, change in enthalpy, pressure and change in volume. And according to the given question, ethylene gas में hydrogen add करवाया गया है. The formula, chemical formula for the ethylene is C2H2 and hydrogen gas is added. So ये हमारे पास फॉर्म करेगा C2H4 which is the ethane. And for this it is given कि जो हमारे पास 5 लीटर ऑफ इथाइलिन है वो रिएक्ट करता है 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ. एंड प्रेशर इज गिवन एज 1.5 एटमॉस्फेयर एंड डेल्टा H के लिए वैल्यू इज गिवन एज minus 0.5 किलोजूल. Now according to this question, we can see the ratio of the reactant is 1:1 and जो product form हो रहा है that is also 1. So from this we can say अगर हमारे पास 5 लीटर ऑफ C2H2 कंबाइन किया है 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से, then it will lead to the formation of 5 liter of C2H4. Now we will check the change in volume. So delta V का वैल्यू जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है that is 5 लीटर, माइनस करेंगे जो हमारे पास इनिशियल था, इनिशियल में we had 5 plus 5. So this is also in liter. So 5 minus 10 is equals to क्या आ जाएगा minus 5 liter. So delta V का value is minus 5 liter. Here we have value for the pressure, when value for the change in enthalpy, and we have to find the internal energy of this. So now we can use all these values. So change in internal energy will be equal to the change in enthalpy, that is given as negative of 0.5 kilojoule, and then it is minus P delta V. pressure का value is 1.5 atmosphere, 1.5 atmosphere multiplied to the change in volume, and that is minus 5 liter. So now we will solve this. 0.5 kilojoule minus, और ये आएगा हमारे पास negative of 5 multiplied to the 1.5 atmosphere liter. So
एटमॉस्फेयर लीटर को हम चेंज करेंगे किलो जूल में, एंड एज पर दिस वी कैन सी 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल्स टू 100 जूल. सो अगर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल्स टू दी 100 जूल है, देन हमारे पास दिस मच विल बी मल्टीप्लाई टू दी 100 माइनस 0.5 किलो जूल. ये माइनस और माइनस का साइन मिलकर प्लस हो जाएगा, and 1.5 multiplied to the 5 will be 7. It will be 0.75. It will be 7.5 आएगा हमारे पास ये. एंड एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो ये हमारे पास आया जूल में. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द किलो जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू द 10 raised to power minus 3 किलो जूल. सो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई टू द 10 raised to power minus 3 किलो जूल, and we can write it as divided by 1000. सो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड किलो जूल एंड किलो जूल है, माइनस का साइन है यहाँ पे, प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड साइन जो है हमारे पास that will be remain for the positive, because ये आएगा माइनस का 0.5 प्लस का 0.75, and by this we will get it as 0.25 kilojoule. And from the given options we can see जो हमारे पास ऑप्शन सी है, that is the correct response for the same, 0.25 kilojoule. Let us mark the option C as the final answer of this question. Option A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.